Bismillahirrahmanirrahim. In this lesson, we will see how different planktons can be used as indicators, as bioindicators, to check the quality of different water bodies. We discussed before as well, planktons and other such organisms are best suited to study their habitat, their ecosystems, because they respond very quickly to their surroundings. So these are best suited to study the water pollution and other such things happening in a water body. So planktons are profoundly sensitive to natural change and thus are best markers of water quality, especially lakes. झील लेक्स को स्टडी करने के लिए बेस्ट जो हैं वो प्लैंकटॉन्स हैं. बहुत से डिफरेंट किस्म के प्लैंकटॉन्स पाए जाते हैं. मुख्तलिफ किस्म की वाटर बॉडीज में मुख्तलिफ किस्म के प्लैंकटॉन्स होंगे. एंड विद एवरी डिफरेंट प्लैंकटॉन्स द मेटाबॉलिज्म इज समवट डिफरेंट एज वेल. So we can pick and choose so many ways through which we can study planktons to study the quality of their ecosystem indirectly. Many planktons in general reproduce at an increased rate in lakes when there is high concentration of phosphorus and nitrogen. Example यहाँ कोट की जा रही है कि for example अगर किसी water body में especially lake में phosphorus और nitrogen की concentration बहुत ज़्यादा है, तो जो ज़्यादातर प्लैंकटॉन्स है वो रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट कर देंगे. दे विल रिप्रोड्यूस एट मच रैपिड रेट लीडिंग टू मच हाई नंबर ऑफ प्लैंकटॉन्स इन दैट वाटर बॉडी. So if you see the high number of planktons in a water body, you can indirectly say that this water body may be having much high concentration of phosphorus and nitrogen. You can see in this diagram, in this flow chart, that the water body, if it is having planktons and it is also having high concentration of nitrogen and phosphorus, these planktons will start reproducing at much higher rate. And however, this tells us, though it tells us that this lake might be having high concentration of nitrogen and phosphorus, it also tells us that this high rate of reproduction of plankton will obviously result in high number of planktons, and this indirectly and ultimately can affect the quality of the water and decreasing the quality of the water. So if that happens, it will affect the life which is existing in that water body. So you can see here that we can not only indirectly assess the quality of an environment by looking at the bioindicators, but we can also foresee that what could be the circumstances, what could be the outcomes of a certain scenario. For example, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से प्लैंकटॉन्स की रिप्रोडक्शन बढ़ रही है, सो यहाँ से इजीली अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इकोसिस्टम जो है ये डिस्टर्ब होने वाला है, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन बैलेंस दैट ऑपरेट्स इन एवरी इकोसिस्टम. हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक ख़ास डाइवर्सिटी, एक ख़ास तादाद एक इकोसिस्टम को मैनेज रखती है, स्टेबल रखती है. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तादाद कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए या ख़त्म हो जाए, इकोसिस्टम जो है वो अल्टीमेटली डिस्टर्ब हो जाएगा. एंड सो इज़ हैपनिंग इन दिस एग्जाम्पल. In addition to being a health indicator, planktons are also the fundamental sustenance for many larger organisms in lake. बहुत सारे जो बड़े organisms हैं किसी water body में, वो smaller organisms के ऊपर feed करते हैं, and planktons are smaller organisms, mostly unicellular also. So जो इनसे ज़्यादा बड़े organisms हैं वो obviously इन पे feed करते हैं. So phytoplanktons and planktons in general, they have much more roles to play in their ecosystem. And in the trophic levels in the food chain as well. Plankton also plays an important role in biological deterioration of organic matter. Decay में भी बड़ा हाथ है इनका. जो organic matter की decay है और उसकी recycling है, उसमें भी planktons बहुत बड़ा role play करते हैं. However, if plankton population are too large, this creates other problems in managing the water body. For example, fish play important role in grazing the planktons. So fish can be used to remove the increased population of certain plankton. So you can see here how nature operates. अगर एक किसी organism की यहाँ पे example में plankton की reproduction बढ़ रही है due to certain changes happening in the environment, तो this increased concentration leads to increased grazing of these planktons by the fish. So that's how nature maintains ecosystems. एक चीज़ डिस्टर्ब हो रही है तो दूसरी चीज़ उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगी. However, if that fails, the whole ecosystem is disturbed. However,
यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती. कई प्लैंकटॉन्स ऐसे हैं जो कि सर्टन टॉक्सिक कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स विच आर हार्मफुल टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल टू फिश एज वेल. सो अगर इस प्लैंकटॉन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, fish cannot graze on this plankton because this plankton is producing toxin. So fish cannot be used against the increased population of this plankton. Thus planktons can be termed as useful or harmful with respect to wastewater, fed production or fishes. So as goes with any other thing, these planktons can have beneficial effects as well as harmful effects as well. Depends how we look at them and how we want to use them for different reasons and to detect the quality of the environment. I will see you in next lessons.